And physical protection, like wear your hat, your sunglasses are very important. Sunglasses are not just a style statement, it's very important. Sit them down, explain इसमें steroid तो नहीं है नहीं नहीं, calm down, it's with tretinoin. I have actually made a reel where I was faking the glass skin. If you go through the thing, it's so easy to fake it. They'll be, we want a Korean glass skin, and my first question to them is आपकी मम्मी कोरियन है? They're like नहीं, हम तो यहीं के हैं. हेलो एवरीवन, वेलकम टू फर्स्ट एपिसोड ऑफ उदयपुर स्पीक्स। तो आज हमारे साथ है उदयपुर की वन ऑफ द फेमस डर्मेट्स डॉक्टर स्वाति त्रिपाठी। तो मेरा मैम से एक क्वेश्चन है, पर्सनल क्वेश्चन है मैम मेरा, कि आपकी खूबसूरती का राज क्या है? I would like to thank my mom who had me, my dad who helped. I guess I take very good care of myself. मैं अपना बहुत ध्यान रखती हूँ, मैं मेरी डाइट पे ध्यान रखती हूँ, मैं एक्सरसाइज बहुत रेगुलरली करती हूँ, एंड मैं लेजर्स भी बहुत करती हूँ, और मैं मेरा हाइड्रा करती हूँ एवरी मंथ. तो आई मेंटेन माई सेल्फ वेरी वेल. आई प्रायोरिटाइज माई मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ. मतलब जस्ट बीइंग बोर्न इन अ सर्टेन वे इज़ नॉट इनफ, उसको मेंटेन करना भी ज़रूरी होता है. तो मैम एक क्वेश्चन ये था कि पहले जो थी सिर्फ लड़कियां जो थी वो स्किन केयर करती थी, डेली रूटीन जो था, आजकल लड़कों को भी इन चीजों में इंटरेस्ट है, बहुत कीन इंटरेस्ट है. तो कुछ आप रूटीन बता सकते हैं जो लड़कों को फॉलो करना चाहिए या डेली स्किन केयर रूटीन? See, if you can just divorce yourself from wo 5-in-1 body wash, that would be great. Number one. Number two, just stick to something very basic like cleansing, moisturizing and sunscreen. अगर आप कुछ भी नहीं करना चाहते हो, just can't be bothered, just be very specific about your sunscreen. एक सनस्क्रीन मतलब आप ट्राई करिए डिफरेंट सनस्क्रीन्स, लॉट्स ऑफ सनस्क्रीन्स इन द मार्केट. जस्ट try one. If it suits you, stick to it. That would be my advice. Cleansing, moisturizing and a sunscreen. Be very particular about application और इसका री-एप्लीकेशन, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है. आप कितना 2 फिंगर टिप यूनिट्स अप्लाई कर रहे हैं, आप बार बार कितना री-अप्लाई कर रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. ये नहीं कि मैं सुबह एक बार लगाया था मैंने 8 घंटा पहले और मेरा बर्न हो गई स्किन. इट डजेंट रियली वर्क. आप स्वेट करते हैं, आप बाहर जाते हैं, आपका ऑयल प्रोड्यूस होता है फेस पे, तो वो चला जाता है, सनस्क्रीन हट जाता है. तो आप थोड़ा अगर उसके ऊपर ही ध्यान दे दे, दैट्स इनफ. मैम एक चीज ये और थी कि बहुत सारे लोग जो होते हैं वो डेली स्किन के रूटीन में चेंज करते हैं, मंडे को अलग चीज क्रीम लगाई, ट्यूसडे को अलग क्रीम लगाई. तो ये चीज कितने हद के हद तक सही है कि चेंज रोज करना चाहिए या फिर? ये चेंज यूजुअली लोग तब करते हैं जब वो रेटिनॉल या ट्रेटिनॉइन यूज़ कर रहे होते हैं. तो यूजुअली मैं भी प्रिस्क्रिप्शन में ऐसे ही चेंजेस लिखती हूँ, बिकॉज आप ट्रेटिनॉइन अगर स्टार्ट करें तो आप एकदम रेगुलरली यूज़ नहीं कर सकते. उससे स्किन बहुत इरिटेट होती है, बहुत एक्सफोलिएशन होता है, देन लुक्स अ बिट ऑकवर्ड ऑल्सो. तो या इट्स फाइन, यू नो, वट एवर वर्क्स आउट फॉर यू, फ्रेंकली. तो मैम, डू यू थिंक दैट जैसे लोग बहुत स्टेरॉइड्स लेते हैं, मेडिकेशंस लेते हैं फॉर प्रॉपर स्किन की कोई इन्फेक्शन ना हो जाए या कुछ आगे ब्रेकआउट ना हो जाए, तो डू यू थिंक दैट स्टेरॉइड्स एंड मेडिकेशन रियली हेल्प फॉर लॉन्ग टर्म? स्टेरॉइड्स तो फ्रेंकली कोई नहीं, मतलब अगर मैं प्रिस्क्राइब भी कर देती हूँ किसी लेजिट डिजीज़ के लिए, तो भी लोग यू नो दे टेक आउट देयर तलवार. स्टेरॉइड नहीं लेंगे हम. देन यू हैव टू लाइक सिट देम डाउन, एक्सप्लेन इसमें स्टेरॉइड तो नहीं है. नहीं नहीं, काम डाउन, इट्स में ट्रेटिनॉइन है. नहीं. सो नहीं. सी, लॉट्स ऑफ पीपल क्या है कि वो ओवर द काउंटर, आई गेट व्हाट यू आर सेइंग, बिकॉज क्या है ओवर द काउंटर ये आते हैं ना आजकल, ये ट्यूब्स आती है ना, ऑल इन वन वाली ट्यूब, 5 चीज़ें एक में मिक्स्ड सब दे देते हैं. तो Sulfamycin, retinol, all that junk. is fine. Like they usually, so they start with clobetasol या mometasone. That's the salt that they start with. और उसमें 5-6 चीज़ें और होंगी. तो and I have seen lots of women apply that on daily basis on their face, क्योंकि उनको ये बोलते हैं कि स्किन ठीक हो जाती, गोरी हो जाती है, आपको जो पिगमेंटेशन है वो कम हो जाता है. तो नहीं, मतलब इनिशियली बहुत अच्छा लगता है ये, फिर उससे स्किन बहुत पतली हो जाती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. आपके बाल उगने लग जाते हैं स्किन पे, स्किन बिकम्स मोर हेयरी देन यूजुअल, बहुत सेंसिटिव हो जाती है. अगर आप बाहर सन में जाएंगे तो स्किन बर्न होने लग जाती है, मतलब थोड़ी सी भी हीट और सन टॉलरेट नहीं कर सकते. और अगर आपको कोई चोट लग गई गलती से भी वहाँ पे, इवन इफ यू हैव अ स्क्रैच, इट टेक्स एजेस टू हील. एंड सेकेंडली वो छोटे छोटे दाने होने लग जाते हैं, वेरी माइन्यूट, स्टेरॉइड एक्ने बोलते हैं उनको. तो वी हैव दिस टर्म नोन एज स्टेरॉइड फेसिस for people who use these combination creams. Now
हो सकता है यू कैन, एक तरीके से स्किन को लत लग जाती है ऑफ दिस स्ट्रॉन्ग स्टेरॉइड विच इज़ नॉट टू बी अप्लाइड ऑन फेस। तो उसको हटाने के लिए, उसको कम करने के लिए इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, बट हो जाता है, इट टेक्स टाइम बट हो जाता है वो धीरे धीरे करके, वी काइंड ऑफ गेट यू बैक ऑन ट्रैक। तो जैसे मैम जो लोग जिनको बिल्कुल नॉलेज नहीं है स्किन का, इफ दे कम कि वी हैव दिस स्किन इशू और ये है ऐसा है, डॉक्टर रिकमेंड अ स्टेरॉइड, एंड देन फॉर अ गर्ल, बीइंग अ गर्ल, फॉर एवरी मंथ देयर इज अ मेंस्ट्रुअल साइकिल, इट आल्सो अफेक्ट्स पीरियड. So do you think that that can be managed with medications and menstrual cycle, that can be managed, or avoiding medicines for a time period is effective? So, firstly, I don't think any dermat is going to give you steroids the first time you visit them. I don't. I'm yet to come across anybody who has एकदम कि मतलब आए और टॉफ़ी की तरह दे दिया, no, because it's a very difficult to taper it off and मतलब it's a whole lot of headache. I don't bother with it until and unless it's very 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 necessary. मतलब आपको बहुत allergic reaction हो गया है या आपको कोई autoimmune disorder है, तब we kind of switch to that. Autoimmune disorders when your immune system starts attacking your body. So if steroid मैं प्रिस्क्राइब नहीं करती, तो आई एम येट टू कम अक्रॉस समथिंग लाइक दैट कि मेंस्ट्रुअल चेंजेस एंड एवरीथिंग. आई हैवंट कम अक्रॉस एनी सच इश्यूज बिकॉज आई डोंट यूजुअली प्रिस्क्राइब इट, तो कांट रियली कमेंट ऑन इट फ्रैंकली. मैम एक चीज ये होती है कि अभी तो मतलब बाहर टेम्परेचर सही है, ज्यादा बहुत ज्यादा गर्मी नहीं है, लेकिन जब अभी मार्च अप्रैल आता है उस टाइम टेम्परेचर 45 to 50 डिग्री पहुंच जाता है. तब उस टाइम क्या चीज, किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए स्किन के लिए कि उस स्किन बर्न ना हो या चीजों. Sunscreen application, reapplication, and physical protection, like wear your hat, your sunglasses are very important. Sunglasses are not just a style statement, it's very important because when you wear your sunglasses ना, जब आप नहीं पहनते और आप डायरेक्ट धूप में जाते तो ए आपका कैटरैक्ट अर्ली ऑन होने का रिस्क बहुत इंक्रीज हो जाता है, बी आप है ना ऐसे करके देखते हैं तो आपके रिंकल्स बहुत जल्दी होने लग जाते हैं आइज़ के आसपास, एंड सी योर eyesight, in fact, it does get weaker if you just are out in the sun without any protection. So yeah, these three things are important. एक चीज ये और थी कि जब सनस्क्रीन जो बहुत सारे लोग लगाते हैं लेकिन उनको आइडिया नहीं था एसपीएफ क्या होना चाहिए, जो उसके बारे में आप कुछ लोगों को बता सके कि एसपीएफ कितना होना चाहिए. ओके सो देखो, बेसिक से भी स्टार्ट करो ना, SPF 30 से, जो तुम्हें पसंद आए करो. SPF 30 से भी अगर आप स्टार्ट करते हैं, सो द थिंग इज, द पॉइंट इज रीएप्लीकेशन. अगर आप SPF 50 लेते हैं तो इट जस्ट प्रोवाइड्स 1% मोर प्रोटेक्शन देन SPF 30, बट दैट 1% इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. एंड SPF को री-अप्लाई करना, दैट इज़ व्हेन द पोटेंसी ऑफ द SPF रियली कम्स इन इफेक्ट. अगर आप SPF 50 या SPF 115 वट एवर यू टेक, एक ही बार अप्लाई करके आप बाहर निकल गए तो स्वेट से जाएगा, आपके ऑयल ग्लैंड्स की वजह से इट गेट्स वाइप्ड ऑफ. यू हैव टू री अप्लाई इट फॉर इट टू बी इन इफेक्ट. SPF 30 से तो स्टार्ट करना ही चाहिए मिनिमम. डोंट गो विद लाइक SPF 15 और वट एवर वेस्ट है. So, ma'am, आज की हम generation is very much mesmerized about what is Korean skin type and what is Korean routine. They are actually, like starstruck about what a glass skin the people have. So, do you think that keeping a Korean skincare alive in daily routine is effective and it is a good aspect? आजकल तो जो रील्स में आ रहा है कि कोरियन स्किन वाली जो चीज है वो बहुत. I have actually made a reel where I was faking the glass skin. If you go through the thing, it's so easy to fake it. You just need a ring light and lots of moisturizer on it. It's just so okay. So first of all, we do procedures here. जिसमें we do have lasers for a thing to make your skin clearer and better. But मेरा हमेशा question ये रहता है patient से, like we want the Korean glass skin. They will like pakke, they'll be completely from here, Mewadi, Marwadi, pakke, they'll be, we want a Korean glass skin. And my first question to them is, आपकी मम्मी कोरियन है? And they're like, नहीं, हम तो यहीं के हैं. तो एक, अच्छा आपके पापा कोरियन है? बिल्कुल नहीं. आपके दादा दादी नाना ने कोई तो कोरियन है? तो they're like, नहीं. मैंने कहा तो फिर आप कोरियन कैसे बन जाओगे? Like how will you get a Korean? पॉसिबिलिटी वो चीज तो बहुत वो. So एक तो genetic predisposition है because and the climate there, the place they stay in, and genetically they are kind of blessed, most of them. I'm not going to say 100%. So,
like, and also they have seen generations before them take very good care of themselves, and they follow that, you know, they take good care of themselves, they find time. And agar aap thoda sa, if you go online or whatever, if you come across anything regarding Korean skincare, Koreans are very, ek to they are very sweet people. The thing is, they're very exacting with their standards about women, you know. The skin should look a certain way, women should look a certain way, they should have this size only, and you know, it's a very exacting standards. And I think to put yourself through the whole 10-12 steps, it's very brutal. So agar aap chahte कि आपकी, I think you should aim for a clean skin, clear skin, healthy skin, वो हो जाता है. You can either have a good routine if you are like a teenager or in your mid-20s or something. You can stick to a routine that works out for you, prescribed by a dermat or whatever you are comfortable with. And as you grow older, definitely put in little bit of lasers or hydra, whatever, जिससे थोड़ा आपकी skin maintained रहे. Because then like post 30, you know, suddenly have the second peak in life where you start noticing wrinkles and sagging of skin. So yeah, you kind of need to maintain it, definitely. But yeah, if your dadas are not Korean, you cannot be Korean. So, ये चीज तो स्किन केयर के बारे में, एक आपके बारे में था कि आप जब, आपको किसने मोटिवेट किया इस चीज में आने के लिए, और आप फ्यूचर में क्या आपके एस्पेक्ट्स हैं कि माय क्लिनिक जो है आपको उसको कितना, कहाँ ग्रो करना है, सिर्फ उदयपुर में है या अदर सिटीज में भी? so my main, the person who kind of motivated me, definitely my mom. घर में जो मिलता था फेस पे लगाया जाता था, and I thought it was fascinating, you know. So not in that way. Actually, my mom struggled with adult acne for a majority of her life. You know, she always had a clear skin, beautiful skin, and then adult acne onset हुआ उनके, big cystic acne. And the thing is, it took a very big toll on her confidence. And I could see that as a child, you know, कि I remember this one incident कि हम बस ऐसे खड़े हुए थे. She had big acne, cystic acne. We were just मम्मी vegetables buy कर रही थी. We were just, मुझे school से just लेके आई थी, and she was just standing there. And there was this complete stranger, the complete this boy, you know. And मैं मम्मी के साथ वहाँ खड़ी थी, and this boy is like from distance he's pointing at her. तो क्या हो गया, ऐसे 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 कर के. And मैं उस टाइम पे I was young, but I could still understand that he was you know, making fun of my mother because of something she has no control over, you know. And that guy literally looked like उसने 7-10 दिन से नहाया नहीं था वो, and he's making fun of somebody with acne जिसका कोई control नहीं है उनका उसके ऊपर. तो that really hit me hard, you know. And then I told mom, why ये point कर रहा है ऐसे आपका ऐसे. So I could see that hurt in her eyes, you know. I could see that, you know, dejection कि what do I do, you know. हाथ में नहीं, फिर भी वो लगता है कि हाथ अपने कंट्रोल में नहीं, लेकिन फिर भी लगता है कि exactly, because and then, you know, we would go to functions or whatever, aunties, relatives, and they'll be ये क्या हो रहा है स्किन पे. It's not like कि वो सुबह उठी और उन्होंने पिंपल चिपकाए अपने फेस पे, you know. Nobody wants to look this way. Yeah, and I could see that hurt and everything on her face, and that kind of, and then even I had acne when I was in college, and that took a very, very heavy toll on my confidence. You know, like the kind of acne when you wake up in the morning and there's pus on your pillowcase, that acne. So, and it took me a very long time to get out of that. It was, I was very low on confidence. So that kind of motivated me to get into this field. And that still motivates me. जैसे कि मेरे पास patients आते हैं, देखो, okay, we don't want oral medications, we want some other options. So I made sure those options are available here, with which I can help them out, you know. So even though it does look like it's a minor thing, but since it's just present right there outside, it can take a very, आपके confidence को बहुत गिरा सकता है acne, you know. And so yeah, that was my main goal, you know, to work harder, to get something better. And my plans for future with to get the best technologies that I can. I mean, God willing, if I can and if I have a lot of support, then yes, then I will. That's the plan, you know, get the best of the best technology. I want better lasers and the newest technology right here. So because I love lasers, I love new technology. So I want to get that here in Udaipur, definitely.
So ma'am, some person questions. I would really like to know कि आपका favorite street food क्या है? मेरा फेवरेट गोलगप्पे है, ऑल टाइम फेवरेट, जस्ट एज मेनी गोलगप्पे, यस. Also कि जब आप stressed out होती हैं या आपको बहुत tension होता है तो your favorite place where you chill, relax. Stressed out, and I guess, okay, so shower. I guess whenever I'm just stressed out, I just lock myself in the bathroom. That's what I do. I take a shower because I think water helps in clearing my thoughts out. नई चीज सुनी मतलब कि हाँ Water helps, like if you are like I heard very, that now, water I have like so it helps. So early on I discovered, okay, like if I'm very stressed out or a lot of things weighing on me and nothing is helping, so a good shower always helps, definitely. And a murder podcast. Just says he was cut into 1,000 pieces or whatever. I'm like it calms me Satisfaction. down. Like somebody has it far worse than me, so it's okay. Let's just listen to a true crime or a murder podcast. So yeah, you see those memes now online. कि इससे तो ठीक ही है मेरा कि हाँ जो That's why women kind of love listening to that. ठीक है, I can't get worse. ठीक है, चलो. So I love listening to that. That also de-stresses me. You should try it. You do that? No. You should try it. True crime always helps, But I've read books, Agatha Christie and all that. Yeah. Thriller, English thriller. Which one? Any thriller. I love thrillers. They're really nice. But true crime podcast is elite. Just listen to it and you'll be like, हाँ यार, मतलब wow, okay. नहीं बहुत मतलब हाँ कि कुछ तो है. It's relaxing also for some reason. आप क्या प्रेफर करते हैं, चाय या कॉफी? Both. I'm not a one thing person. मेरा मूड के ऊपर है, कभी मसाला चाय, कभी कॉफी. बहुत से लोग ना चाय से पिंपल हो जाते हैं, तो वो आपके साथ होता है कभी चाय पिए पिंपल हो जाए? नहीं, I use skim milk. I don't like dairy that much. मुझे नहीं पसंद है, तो या तो फिर मैं almond milk पे चाय कौन बनाता है? नहीं, skim milk. कॉफी में आप almond milk फिर भी ऐड कर सकते हो, बट चाय में नहीं. So ma'am, continuing from almond milk. Yes, let's go. बहुत ऐसा सुना है कि बहुत डॉक्टर्स ऐसा रिकमेंड करते हैं कि इफ यू हैव एनी स्किन इशू तो स्टॉप ईटिंग डार्क चॉकलेट्स और स्टॉप यूजिंग इनटेक ऑफ डेयरी प्रोडक्ट्स. सो is it really necessary that we stop all these things just to keep skin healthy? Yeah, kind of. If you have acne, so if you eat foods with a high glycemic index, if you eat dairy, if you eat a lot of sweets, fast food, so that can actually trigger your acne. And don't just take my word for it. You can go online and Google it away. You will find more than enough scholarly articles to back it up. मतलब ऐसा नहीं कि जिस डॉक्टर बोल रहे हैं, it's actually researched. There are articles on it. There are case studies on it. So कट ऑफ करने में अगर दिक्कत हो रही है, इट्स फाइन, तो यू कैन जस्ट रिड्यूस इट. यू डोंट हैव टू कम्प्लीटली कट इट ऑफ. एक्चुअली द वेरी एकदम वो ख्याल भी आता है ना, एकदम बंद करना है, तो दिल को और चाहिए होता है फिर. तो हमेशा थोड़ा कम करने का सोचो. कभी ये मत सोचो कि मेरे को एकदम नहीं खाना है. कम करने का सोचो, हो जाएगा. तो इट्स नॉट गोइंग टू बी डिफिकल्ट देन. मैं एक क्वेश्चन पूछना भूल गया. आप उदयपुर से ही हैं? हाँ. आपको मेवाड़ी आती है? नहीं. मतलब आप ऐसे पेशेंट्स आते होंगे ना कभी कि अरे एक्चुअली मैं बाहर ही पढ़ी हूँ उदयपुर से. अच्छा. तो मुझे मेवाड़ी नहीं आती है प्रॉपर्ली. मतलब और इसमें डायलेक्ट्स भी बहुत रहते हैं, तो मुझे समझ नहीं आती है. बट आई हैव एक्सेलेंट विमेन विथ मी हु नो मेवाड़ी फ्लुएंटली. तो अगर कोई ऐसा पेशेंट आता है जिसको नहीं समझ आती है हिंदी, तो मैं उनकी हेल्प ले लेती हूँ. मतलब थोड़ा बहुत भी ऐसे कभी होता है कि नहीं होता, कभी कोई पेशेंट आया अचानक से एक बार कि आपको थोड़ा बहुत समझ पाते हो आप मेवाड़ी? डायलेक्ट्स अलग अलग रहते हैं. अच्छी तो मैं कुछ समझ लेती हूँ, कुछ बिल्कुल समझ नहीं आते. और आंटियों को बहुत मजा आता है, मुंह पे हंस के जाते हैं, तो ऐसे ऐसे कर. और वो तो बहुत मतलब जब मेवाड़ी नहीं आती है उसको जब बोलने की कोशिश करते हो बहुत अजीब लगती है कि मतलब मेवाड़ी नहीं आती है उसको बोलने की कोशिश करते मुझे हो. ऐसा लगता है मैं बोलने की कोशिश करती हूँ ना लैंग्वेज, फिर मेरे को लगता है जैसे मैं लैंग्वेज की इंसल्ट कर रही हूँ, उसमें इतना अजीब ढंग से बोलती हूँ वो. और वैसे भी सब हंस के चले जाते हैं, तो मैंने फिर ट्राई करना बंद कर दिया. और नहीं, मेरे पास है, आई हैव गॉट अ गुड पर्सन जो फ्लुएंट है, जो लैंग्वेज को रिस्पेक्टफुली बहुत अच्छे से बोलते हैं. तो वो अच्छे से समझ भी आ जाता है, तो फिर इंटरेक्ट भी कर लेती हूँ. सीखने की कोशिश की, बट इतना
it just kind of made me realize मेरे में बिल्कुल टैलेंट नहीं है लैंग्वेजेस लर्न करने का, तो मैंने फिर ट्राई नहीं किया। करे मतलब क्यों ना आपको पीजी टाइम्स वगैरह में करना पड़ता है, क्योंकि आपके पास पेशेंट्स आते हैं जिनको वही भाषा आती है। क्योंकि मेवाड़ में तो इतने लोग हैं, तो वो मेवाड़ी प्रेफर करते हैं कि हम बोल देते तो वार्ड में जो भैया आता है ना, भैया इधर आना है, क्या बोल रहे हैं, तब वो काम आता है। तो वाला ट्राई करते, समझ आ जाती है, बट कम्युनिकेट करना थोड़ा मुश्किल रहता है। दैट्स द ओनली थिंग। एक चीज़ ये मैं पूछ रहा था कि आजकल मतलब यंगस्टर्स में, मतलब लड़कों में, यंगस्टर्स में बहुत वो हेयर फॉल का बहुत डर है, हेयर फॉल या बाल वाइट हो जाएंगे, वो चीज़ बहुत डर है। तो वो किस रीजन की वजह से होता है, और उसको कैसे क्योर किया जा सकता है, कैसे उसको रोका जा सकता है? So white hair can be because of macro and micro mineral deficiency, copper, selenium, magnesium. So you have to take your sort of supplements accordingly. Stress की वजह से, environmental changes की वजह से, और अगर आपका genetic predisposition है, मतलब अगर आपके पेरेंट्स के बहुत जल्दी white hair आए या somewhere in the family है, तो आपके भी chances है कि आपके भी हो सकता है। एंड यंगस्टर्स में आजकल स्ट्रेस भी ज़्यादा रहता है, डेफिनेटली। सो इट्स लाइक एग्रीइंग, डेफिनेटली, बिकॉज द एक्सपेक्टेशंस आर फार हायर, द कंपटीशन इज फार टफर, एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेक इट दीज डेज, एंड फ्रेंकली मैं जैसे बताती हूँ, पेरेंट्स जो बच्चे आते हैं दिखाने के लिए वाइट हेयर बहुत जल्दी आ गए, इट्स बिकॉज द कोर्स चेंजेस आर अ लॉट, they have a lot more to do. So I think personally stress की वजह से it's more these days, and how you can remedy is take your supplements regularly. अब मैं वैसे नहीं बोल सकती स्ट्रेस करना बंद कर दो, I can't do that, but as much as you can manage, I guess. Everybody is stressed out these days, and yeah, see a specialist for it, but you can always start. Biotin अकेले लेने से नहीं होगा, you have to take a supplement with macro and micro minerals, both कॉम्बिनेशन ले तो बेटर रहेगा। यस। तो मैम माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि जैसे आपके पास पेट्स हैं, तो डू यू थिंक दैट पेट फर अफेक्ट स्किन? जैसे बहुत स्किन सेंसिटिविटी होती है कुछ लोगों को, तो कुछ लोगों को एलर्जी हो सकती है, डेफिनेटली। मुझे भी फ्रैंकली बहुत एलर्जीज हैं, मुझे बहुत एलर्जी होती है, बट दैट डजंट स्टॉप मी। But yeah, I mean होती है allergies if you are asthmatic or whatever. So if you have dermatitis issues, then you can. But frankly, after some time ना, your immune system kind of gets used to it. पहले मुझे बहुत होती थे issues, अब नहीं होता है। तो after like a year or two सब stable हो गया, वरना मुझे भी छींकें, खांसी and itching वगैरह होती ही है। But now it's fine. It's all good, and frankly they are my biggest de-stressors. It's so good when you get home and lots of dogs there just waiting for you. It just makes me very happy. मैम स्किन केयर तो अभी, स्किन केयर रूटीन्स तो ये सब चीज़ें तो अभी आई है। पहले के ज़माने में जब कुछ भी नहीं होता था, ये चीज़ें तो कुछ होती नहीं थी, तब भी लोग सुंदर होते थे, तब भी लोगों की मतलब जो चीज़ें थी, पिंपल्स नहीं होते। तो अभी चेंज क्या हुआ टाइम के साथ कि why would you say that कि पिंपल्स नहीं होते थे? मतलब उस टाइम भी चीज़ें जब नहीं थी चीज़ें, तब भी ऐसा वो यूँ नहीं था कि चल नहीं रहा था, सब चीज़ें चल रही थी। अब जब अभी का टाइम आया तब चीज़ें शुरू हुई है, सब चीज़ें स्किन केयर और ये सब चीज़ें नई क्रीम तो ये सब चीज़ आई है, तो क्या चेंज हुआ टाइम के साथ ऐसा? सोशल मीडिया, इट्स लिटरली राइट देयर विद यू, यू कांट एस्केप इट। लाइक हमारे जो एंसेस्टर्स थे उनके पास सोशल मीडिया नहीं था। अगर सपोज या दादी परदादी हैड एक्ने इश्यूज या एलर्जी इश्यूज या व्हाटएवर, या उनका स्किन बहुत काला था, तो वो कोई वीडियो पे नहीं आता था, या वो मतलब फैमिली में ही रहती थी वो बात, राइट? इट वाज लाइक कि वो उसका तो मुंह इतना खराब है टाइप से, वो फैमिली में ही घूम रही है बात। यहाँ पे इफ यू हैव एक्ने और इफ यू हैव अ बैड स्किन, वन वीडियो, वन फोटो, इट्स नॉट जस्ट यू, लॉट्स ऑफ स्ट्रेंजर्स आर गोइंग टू सी दैट। सो दैट्स व्हाई आजकल ज़्यादा कॉन्शियस फील करते हैं, एंड प्लस फिल्टर्स एंड एवरीथिंग एडेड टू फोटोग्राफ्स ऑफ इन्फ्लुएंसर्स ना, दैट डिस्टॉर्ट्स योर व्यू। मतलब ऐसा ही दिखना है, ऐसा ही होना चाहिए। और एक माइंडसेट बन जाता है कि उसने वो ऐसा दिख सकता तो मैं क्यों नहीं दिख सकता। Your standard of perfection has increased. also they are influenced by celebrities, actors, actresses, so they are like ऐसा ही skin चाहिए। Absolutely, your standard of perfection, your beauty, it just keeps changing every decade or so. उस टाइम पे standards were different. And उस टाइम पे black and white films रहती थी, तो imperfections भी तो नहीं दिखते थे। Now it's like completely HD, so makeup is accordingly, the effects are accordingly. तो अगर imperfections है भी उन लोगों के जिनको आप idolize करते हैं, वो नहीं दिखेंगे।
because they spend a lot of money to make sure the imperfections are not visible. So yeah, I guess it's not fair in this generation as well. You can't escape it, करना ही पड़ता है. So, ma'am, as per Pookie girlies, I have a question related to nail extensions. For how long can we keep those nail extensions so that our skin, our nails does not gets damaged? So, A, do not touch the cuticle. Cuticle is very important. And B, always use a moisturizer if it has SPF in it. More the merrier. And always take your supplements also. Now, I personally don't get extensions done. So, I don't know how long they last or कितना आपको चेंज कराना पड़ता है. But all I know is that you should take frequent breaks. I do get gel nail paint done, so I know कि उसमें breaks चाहिए होते हैं. आप like 1 to 2 या 3 months also continuously you can stretch, and then you take a little 1.5 month का break आराम से. When you are not doing anything, nail strengthening, nail polish ही लगा रहे हो, clear and just taking care overall. So I think periods of stress-free nails are also important. Because after removing those nails और वो जैसे ही अपने आप से निकलने लगते हैं तो the nail gets a little more bluish, the internal blood. It's the glue, I guess. Sometimes the glue and all that they use, so उससे हो जाता है थोड़ा bluish gray. But again, like take a break. Continuously extensions is not recommended, definitely. Grow your nails out, take proper supplements, and जो आपका shape, मतलब get gel nail polish done if you want, or normal also. But थोड़ा breaks लेना चाहिए. Is there any remedy that if the nail ruptures or anything? Oh gosh, nail surgery straight up. Nail ruptures मतलब crack हो गया बीच में से, टूटने लग गए. So, show a specialist for the same. Like I said, it's very. See the point when they are like अच्छे से वो घिसाई करते हैं ना नाखून, you start feeling that heat and that discomfort. That's the point when you should stop. ये मेरा लास्ट सेशन है, अब नेक्स्ट सेशन नहीं होने वाला. तभी आपको समझ आ जाता है कि अच्छा अब नाखून ने बोल दिया अब नहीं, अब लेट मी आफ्टर दिस इज द लास्ट वन, आई विल गिव इट अ गैप ऑफ 2-3 months, then I'll again get it done. Okay, so you have to take that break. It's very important. And if your nails are brittle and if they are breaking, जैसे कभी पहले ब्रेक नहीं करते थे अब ब्रेक कर रहे हैं, तो that could be because of continuous extensions or gels or whatever. So you should be very careful about that. Take your supplements, very important. Okay. Also, अभी एक नया ट्रेंड चला है आदिवासी हेयर ऑयल. So what is your say on that? See, I think अगर आपके कोई स्कैल्प प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपके मतलब डैंड्रफ नहीं है, सोराइसिस नहीं है, अगर आपके पैटर्न हेयर लॉस नहीं है, मतलब जेनेटिक पैटर्न ऑफ हेयर लॉस नहीं है अगर आपके, और अगर आपके कोई स्कैल्प डिजीज़ नहीं है, स्कैल्प हेयर डिजीज़ नहीं इन जनरल, तो आप आदिवासी, शहरी, पहाड़ी जो आपको ऑयल लगाना है आप लगाइए. ओके, बट द थिंग इज़ कि आप बस एक तेल लेकर के आगे नहीं, पुटिंग ऑल योर होप्स ऑन इट विद all the skin conditions, you better fix my hair, तो वो तेल के लिए भी unfair है. So अगर आपके कुछ है above mentioned problems में से कोई कुछ भी है आपके, तो see a specialist, get it corrected first, and then after that indulge in whatever oiling you want, definitely. Also, ma'am, जैसा हम देखते हैं हर स्किन टाइप बहुत अलग होती है. So there's a difference between how the lips look like, the texture and the skin facial texture. So do you think that we can prevent the darkening of lips? Use a lip balm containing SPF 15. That's very important, or above also. It's fine. Use it regularly as much as you can. No biting, no chewing of lips. That's also very important. Take enough water. And under eyes, always start using a cream. Under eye cream, there's no harm. It lasts you for a long time. Start roller form mein, cream form mein, serum form mein, whatever. Always treat your under eye area very gently and use a cream regularly. It's very helpful. So that's the few things. And also अगर आप किसी को notice करते हो कि उनके lips पे बिल्कुल wrinkles नहीं है, probably had fillers done. तो सबके नॉर्मली रिंकल्स रहते हैं हल्के हल्के. अगर आप इन्फ्लुएंसर्स या ऑनलाइन देखते हैं लोगों को जिनके बिल्कुल कोई रिंकल्स नहीं है, एंड दे आर पुटिंग ऑन देयर ग्लॉसेस एंड एवरीथिंग, लिप्स आर लाइक बिग एंड प्लम्प, सो दे हैड लिप फिलर्स डन.
उससे ही रिंकल्स गायब होते हैं. नेचुरली ऐसा नहीं होता है. Also, does smoking affects lips? Oh, 100%. Affects your lips, affects your skin, affects your hair. Overall bad for you. Lungs वाले तो सब ad देखते ही रहते हैं ना before every movie. So, Mukesh. So, your hair, you start balding faster. And we do hair transplant. So, hair transplant में standing instructions रहते. If you are smoking, results are not going to be good. Period. Because vasoconstriction करता है, blood supply, nutrient supply compromise करता है, तो not really good. Secondly, affects the color of your lips, your skin. So yeah, I mean, just kind of avoid it or keep it to a bare minimum. Yeah. By ending this amazing podcast, there is one little question which I'm very curious about. आजकल ये hype भी है कि I think more than hype, is it just a myth or is it true that sunscreen से skin cancer हो जाता है? सनस्क्रीन नहीं लगाने से स्किन कैंसर होता है. बट द थिंग इज, जब लोगों को कुछ करना नहीं होता है या उनसे कोई चीज़ रेगुलरली नहीं करना चाहते हो तो वो बहाने बहुत ढूंढते हैं उसके. देर इज़ नो लिटरेचर सपोर्टिंग दैट सनस्क्रीन्स कैन कॉज स्किन कैंसर. आप सनस्क्रीन नहीं लगाते तो 100% आपको हो सकता है. इफ़ यू हैव अ टेंडेंसी, इफ़ यू, अगर आपके मोल्स हैं एंड इफ़ यू आर आउट इन द हीट ऑल डे लॉन्ग, then yes, you can get it. And being in this field, I have seen people who have never put sunscreen on get skin cancers. And people who do put sunscreens on and are very careful, not a single case till now. Okay, so more lit. अगर आप मतलब just word of mouth नहीं सुनना चाहते हैं तो नहीं ये chemical है हम नहीं लगा, mineral sunscreen लगा लो फिर. You know, because honestly doctors or anybody is not going to sit down and prove things to you. Okay, just go do your research online. I mean, you saw a reel and you're happy with that reel, ho gaya mera research. No, just do more research. Like, is there any scholarly article or anything backing it up? Nothing is backing it up. You know, just random people who want views are spouting all kinds of nonsense online. Don't listen to that. Do your own research. If you're still in two minds about it, you don't want to listen to the doctor, you think articles are all nonsense, you think scientists are dumb, use a mineral sunscreen. ठीक है, मिनरल सनस्क्रीन तो आप कंफर्टेबल है तो आप वो कोई भी अच्छा आपको टिंटेड मिल जाए वो आप यूज करिए. Thank you so much, ma'am, for your precious time. Thank you. Thank you, audience, for hearing us out, and see you in the next episode of Udaipur Speaks. Until then, stay tuned.